Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. How are you students? I hope you are all fine. Today we are here again for your online classes. This is your computer class. This is the 5th lesson of computer. Today the day is Tuesday and the date is 27th April 2021. First of all, I will tell you the book name. It's Computer Education. This is for the 7th class. And now we will open the book. We will open the book from the content pages. Here are the content pages. Unit 1 Hardware Basics. We have complete this one lesson. Today we will take start from the Unit 2 Software Basics. Software Basics में हमारे पास 2 points होंगे, System Softwares and Application Softwares. Software Basics is on the page number 21. Now move to the page number 21. Where is the page number 21? Here is the page number 21. Software Unit 2 Software Basics. Page number 22. We will take start for the reading. Introduction to Software. सबसे पहले सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन. सॉफ्टवेयर क्या है? Computer cannot perform any task with the hardware alone. What is means that computer hardware अकेले हार्डवेयर के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता है. It requires instructions to perform a task. These instructions are called software. उसे कोई भी काम करने के लिए या टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. Now we will read the definition of software. Software is the set of instruction given to the computer to perform a specific task. What is software? It is the set of instruction given to the computer to do a specific task. Software are designed to help user to interact with computer, create documents, play games, watch movies, draw images and painting, etc. What are the software for? Softwares are designed to help the users to watch the movies on the computer, to play the games, to draw the images and paintings, etc. There are two main types of software. सॉफ्टवेयर की 2 मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. How many types of software? 2 types, system software and application software. First we will read about the system software. System software are programs that control and direct the operation of a computer hardware. These softwares are essential part of the computer system. A user cannot work on a computer without system software. There are different types of system software. Few important ones are being discussed below. Operating systems, device drivers, utilities are utility programs. First we will discuss about the operating system. Operating system means OS. OS stand for operating system. O is for operating, S is for system. Operating system is a system software. It is just like the soul of the computer. It is just like a soul of the computer. हम इसको कंप्यूटर की रूह कहते हैं. It is a collection of programs that supervises and control overall function of a computer. Operating system also organize all the data and runs other applications in a computer. It creates a link between a user and a computer. What is the operating software system? Operating system is the soul of the computer. It supervises all the functions of the computer. It controls all the functions of the computer, and it is the link between the computer between the user and the computer. Microsoft Windows. Microsoft Windows is the most widely used operating system for the personal computer. माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब घर में यूज़ कर रहे हैं अपना कंप्यूटर, उस पर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही आपका हुआ होगा. लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक ओएस आर सम ऑफ द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? यूनिक्स है, यूनिक्स है एंड मैक है. नेक्स्ट वन इज़ important functions of the operating system. Important function of the operating system. Operating system के important function कौन कौन से हैं? Some of the important functions performed by an operating system are given below. In the center they have made the operating system. This is like a policeman or traffic policeman you can say. First one is manage the startup process. System files of the operating system are loaded in our RAM. क्या होता है कि रैम में क्या लोड होता है? इसके जो स्टार्टअप वर्क है, कंप्यूटर को जो स्टार्टअप करने का सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग है, जो सिस्टम है या इसकी जो फाइल्स हैं, वो सारे हमारे इसमें रैम में होते हैं. उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है मैनेज फाइल एंड डिस्क operations such as saving, retrieving, deleting files and formatting disk.
उसके बाद फाइल्स को वो मैनेज कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो उनको डिलीट कर सकता है, रिट्राइव कर सकते हैं हम लोग, उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं डिस्क से। नेक्स्ट वन उसका हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प आ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस सिम्यूटेनियसली। ठीक है, हम जो बहुत लगातार जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम उन पर काम कर सकते हैं। लास्ट वन हमारे पास बन रहा था इसका कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। अगर मतलब हम लोग जो भी इसमें डाटा एंटर कर रहे हैं उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करता है। अगर हम कोई प्रिंट के जरिए आउटपुट ले रहे हैं उसको भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। और अगर हम इसके साथ कोई न्यू डिवाइस जो है वो अटैच करें तो वह भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें बताता है। Booting and providing a user interface. Operating system manage the startup process of a computer. It loads the system files in the RAM of the computer and provide a user interface so that the user can easily work on the computer. Managing programs. Operating system help a user to work with multiple programs and applications simultaneously. It manages multiple applications by showing active application in the foreground and other programs on in the background. हमारे पास क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारे foreground में मीन्स हमारे जो नीचे ऊपर जो टास्क बार पैन के ऊपर एक पट्टी आ रही होती है जिसमें ये हमें शो कर रहा होता है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर में और क्या कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो बैकग्राउंड है वो हमारा टास्क बार, जो नीचे हमारा पेन बार होता है टास्क बार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे शो हो रहा होता है। यूज़र कैन ईजीली switch through these applications by clicking their button on the taskbar. File management. Operating system allows a user to manage files and folders. The user can create, save, delete, copy, cut, paste and rename the files and folders easily. हमारी फाइल मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं जिसमें सेव करना या क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होते हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस. व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम चेक ऑल द डिवाइसेस एंड loads their drivers. When a new device is attached to the computer, operating system configures it and installs its drivers so that it can work properly. We will do the reading till here. After this we will move to the page number 34. From the page number 34 we will do the question number 2. Define the following. First one is software. Where is its answer? Move to the previous page on the page number 32. Summary. In the summary point 1 to question 2 part 1 I have right here. Software is the set of instruction given to the computer to perform a specific task. Till here this is the software. Move to the question. The second one is utility program. Again move to the page number 32. Utility program. ये point number 1 2 3 4 5. Utility program allows a user to analyze, configure and maintain the computer. What utility programs do? It allows the user to analyze, configure and maintain the computer. Move to the next one. File manager. It is on the page number, here it is on the page number 25. File manager. File manager is a utility program that helps user to locate, rename, move, copy and delete files. What file managers do? It help the user to locate, rename, move, copy and delete the files. Move to the questions again. Here is the question. Part 3 we have done. I told you where it is. Now disk scanner. Move to the page number 32 again. Disk scanner is here. Disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of our disk. What it locates? It detects the physical and logical problems of a disk. And the last one is device driver. Again move to the page number 32. Device driver. Here is a device driver. Our device driver tells the operating system how to communicate with our device. What the device driver does? Our device driver tells the operating system how to communicate with our device. Okay, I hope you will write down these questions and learn these questions and also do the reading. Okay, take care. Allah Hafiz.